अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन दसगाह की तरफ से टॉपर्स चॉइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बुक है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये वन लाइनर एमसीक्यूज़ होंगे जिसमें हमारे पास एनटीएस के पास पेपर्स, पीटीएस, सीटीएस और प्यास, नेस्कॉम वगैरह जितने भी ये पास पेपर्स हैं, ये जो बुक है ये पास पेपर्स की बेस पे तैयार की गई बुक है। ठीक है, इसका ये एक्चुअली थर्ड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन जो था वो स्मार्ट सीरीज़ की बुक थी, फिर उसके बाद सेकंड जो था एडिशन उसमें कुछ एमसीक्यूज़ अपडेट किए गए थे, और उसके बाद ये जो एडिशन है ये अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। सो ये टेबल ऑफ कंटेंट इसका जो है वो ये है कि सबसे पहले एनटीडीसी का 2021 का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नेस्कॉम एएम इलेक्ट्रिकल 2021, उसके बाद नेप्रा, ओजीडीसीएल, वापडा, नेवी, एलसीसी, फिर उसके बाद प्यास, नेस्कॉम। सो ये अप टू जनरल नॉलेज पोर्शन तक जो है वो हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सो पेपर नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है जी, एनटीडीसी 2021। सो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ओके, सो the convergence characteristic of Newton-Raphson method for solving load flow problem is इसके जो ऑप्शन है वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वाड्रेटिक। प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज जनरली कैरिड आउट बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। द नंबर ऑफ साइकिल्स इन विच हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर कंप्लीट इट्स ऑपरेशन इज 3 to 8 साइकिल्स। स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द diameter of the conductor, एक्चुअली स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे ये गिवन है। उसके बाद है ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड्स लिंक्स बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द रिसीविंग एंड स्टेशन। द एलिमेंट विच एब्जॉर्ब्स द एनर्जी आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। हाउ मैनी बेसिक टाइप्स ऑफ जनरेटर्स? वी हैव 2 types of generators. In parallel resonance circuit, at resonance voltage is maximum. Noise produced in a resistor depends on its resistance value and its temperature. So both A and B options are correct. So Schmidt's trigger produce dash output when input applies is sine wave. So जब square wave जो है वो मतलब जब sine wave हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी आती है? square wave आउटपुट पे आती है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज एज मॉडरेटर। ये एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। द टोटल पावर ऑफ अ विंड स्ट्रीम इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल? सो क्रोमियम इज जनरली नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन डिपेंड्स अपॉन कंप्रेशन रेशियो। इन एयरक्राफ्ट यूजिंग gas turbine, the cycle used is simple. The curve between discharge in meter cube per second and time is called hydrograph. For the stability and economic reason, we operate the transmission line with power angle in the range of 30 degree to 45 degree. The ratio of collector current to the reverse saturation current is called amplification factor. Conductivity of a wire depends upon electron density. Conductor has an excess of free electrons. Unit of potential difference is volt. उसके बाद है in thermal power plant cooling towers are used to cool water used in condenser for condensing steam. In a steam locomotive the engine is double acting and non-condensing. Superheated steam is always at a temperature higher than the saturation temperature corresponding to a steam pressure. As steam enters in a turbine, its specific volume increases. Power plants using coal work closely on which of the following cycle? ठीक है, ये रैंकाइन साइकिल है, ये बहुत ज़्यादा MCQ रिपीट हुआ है। ये out of the following which is not unconventional source of energy? So nuclear energy is not unconventional source of energy. Pressure of steam in condenser is much less than pressure. In power plant, coal is carried from storage place to the boilers generally by means of V belts. Phase modifier is normally installed in case of long transmission line. A voltmeter gives 120 oscillations per minute.
when connected to the rotor of an induction motor. The frequency is 50 Hz. The slip of the motor is, ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली कर लेंगे. 4% इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. A short transmission line has equivalent circuit consisting of series resistance R and series inductance L. The peak value of power angle curve of a transmission line is 50 MVA. If two such identical lines are added in parallel, the resulting peak value is 100 MVA. How many roots quadratic equation has? So 2 roots quadratic equation will have. Which operation is not performed on independent variables? So amplitude scaling is not performed on independent variables. How many interrupts 8085 microprocessors have? Total 5 interrupts. The ratio error of current transformer is due to the exciting current. उसके बाद है common mode rejection ratio. CMRR is defined as differential mode gain to the common mode gain. The sum of all the potential differences in a complete loop through the circuit should be equal to 0. ये जो MCQ है ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है और हमेशा इसका जो NTS वालों ने ऑप्शन जो मार्क किया है वो गलत मार्क किया है. सो ये इसकी जो है वो क्यूरी हर दफ़ा सेंड करनी पड़ जाती है. NTS वाले अपना जो डेटा बेस है उसको वो अपडेट नहीं कर रहे. A copper oxide dash allows current to flow through emitter in only one direction. So rectifier allows current to flow through emitter in only one direction. Stepper motor is a direct current which divides full rotation into large number of steps. So ये direct current option जो है वो यहाँ पे correct है. Which instrument has calibration for both AC and DC values? ठीक है, यहाँ पे है which instrument has same calibration for both AC and DC values. So it is hot wire type. As compared to oscillators, inverters provide low frequency output. A digital to analog converter can be used to make automated potentiometer in comparison measurement. So digital to analog converter can be used to make automated potentiometer. The potential difference between the two similar charges is nil. ठीक है, सिमिलर चार्जेस जब होंगे तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा. Noise in resistance depends upon operating temperature. The radius of curvature of the path of a charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to the particle's momentum. A bridge which is used for the measurement of capacitance of an insulator is shearing bridge. A large size alternator is protected against overloads by providing temperature sensitive relays. The ratio error of a current transformer is due to the presence of exciting currents. In a radio receiver, mixer stage contributes the most of the noise generated. Hot wire anemometers are used to measure velocity of airstream. The letter dBdt is used for, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है. The letter dBdt is used for switch. Coking is heating of coal in absence of air, driving out carbon dioxide and leaving behind the residue and carbon. The output of a solar cell is of the order of 1 watt. ठीक है, ये MCQ भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है जी. The surge resistance of a transmission line is about 400 ohm. In high voltage transmission lines, the topmost conductor is earth conductor. Shunt capacitance is usually neglected in analysis of short transmission line. In order to reduce the skin effect at UHF, copper tubes with silver plating are used. A short transmission line has equivalent circuit consisting of series resistance R and series inductance L. Transient state stability is generally improved by using high speed governors on machines. If the firing angle in an SCR rectifier is decreased, output will increase. Fourier series are infinite series of elementary trigonometric function that is sine and cosine. ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है. The square law of photodetector gives current. This current is proportional to the square of the combined optical field. Light is an electromagnetic carrier wave which is modulated to carry information. Out of the following which one is not the unconventional sources of energy? अच्छा, ये जो MCQ है ये शुरू में भी हमने डिस्कस किया था, तो ये यहाँ पे रिपीट हुआ है. काफ़ी सारे MCQ हो सकते हैं रिपीट हों, तो
it's not a big deal. In case the height of a transmission tower is increased, the line capacitance will decrease, but the line inductance will remain unaltered. The instrument which is used for DC measurement alone is permanent magnet type. Conductors have an excess of free electrons. ठीक है, ये MCQ भी यहाँ पे शुरू में भी हमने यहाँ पे एक जगह पे डिस्कस किया था, यहाँ पे रिपीट हुआ है. Superheated steam is always at a temperature higher than the saturation temperature corresponding to a steam pressure. उसके बाद है dash is the source which gives constant voltage no matter how much current is drawn from it. So real voltage and current source. अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक है डिटेल यहाँ पे कि according to NTS की its correct answer is real voltage and current source. However, its correct option is ideal voltage and current source. So this option was not given in NTS NTDC 2021. यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स. ठीक है, सो यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेकिन क्योंकि जो NTS की है उसके अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट कंसिडर किया गया है. A tunnel diode is a heavily doped PN junction device. The turn-on voltage of a germanium diode is 0.3 volt. Steam engine used in locomotive is double-acting non-condensing type. Which comparison is correct between fluorescent lamp and filament bulb? So average life of fluorescent lamp is 5 to 7 times higher. To carry a current of 100 RMS, area of aluminum bus bar must be at least 25 mm square. The characteristic impedance of a transmission line depends upon which of the following. So geometrical configuration of a conductors is correct option. For what purpose a modulator is used in nuclear power plant? So modulator is used to reduce the speed of fast neutrons. Silicon has its atomic number 14. Its valency is 4. ठीक है, 2 8 18 होता है. सो 2 8 हमारे पास जो है वो 10 हो जाएंगे और लास्ट में 4 आ जाएंगे. सेमी कंडक्टर्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? सो ग्रुप 4. Which of the following does not use the effect of current for measurement purpose? So electrostatic ammeter is correct option. DC equivalent circuit of an amplifier can be obtained by considering the capacitance open circuited. AC motors are of two types, induction motor and synchronous motor. A system which can recover its input from its output signal is known as invertible system. If a dice is rolled 20 times, what is the probability of getting 15 or more heads? So 0.02. As steam expands in turbine, its specific volume increases. Step up substations are associated with generating stations. Which of the following is not installed in a substation? So exciters जो है वो substation पे install नहीं होते. DC generators have dash on rotating shafts that convert AC to DC. So commutator is a device which is used for conversion of AC into DC. Which of the following offers external chips for memory and peripheral interface circuits? So microprocessor is correct option. By which instruction does the switching of registers take place? So instruction opcodes जो है वो यहाँ पे correct option है. An RC series circuit can be used as an integrator when output is taken across capacitor. An operational amplifier integrator has a square wave input. The output should be a triangular wave. Which type of memory is suitable for low volume production of embedded systems? So non-volatile. Which of the following can be used for long distance communication? So RS232. The maximum output voltage of a certain low pass filter is 15 volt. The output voltage at the critical frequency is 10.60. ओके, सो यहाँ पे एक हमसे कुछ नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है कि 91 से 92 से आगे जो MCQ है NTDC के वो यहाँ पे है. ठीक है, सो 92 के बाद 93 यहाँ पे है, क्योंकि ये जो MCQs हैं ये एक्चुअली किसके हैं? ये NESCOM के हैं. ये जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं ये NESCOM के हैं. नंबरिंग आपने यहाँ पे देखनी है कि जो NESCOM का जो टेस्ट है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है.
100 से 98 से, ठीक है, ये 98 से स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो इफ़ अ नेटवर्क, the ratio of collector current to the reverse saturation current is known as transistor stability factor. Conductivity of the wire depends upon free electron density. Memory locations which are used temporarily during program execution from RW memory. So read write memory is actually stack pointer. Sushmit trigger produce dash at output when input applies is sine wave. So square wave. देखिए ये कुछ MCQs हैं जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे रिपीट हो गए एंड में, और कुछ MCQs जो थे जो मतलब हमने ये शुरू में डिस्कस कर लिए थे. यही वजह है कि MCQs जो है वो 83 से एक्सीड कर रहे हैं. जो पेपर हमारे पास आता है वो 83 MCQs होते हैं, उसमें यहाँ पे NTDC NTS के थ्रू जो आता है. सो इसलिए यहाँ पे ये नंबर्स जो है वो एक्सीड कर रहे हैं क्योंकि बीच में से रिपीट हुए हैं. उसके बाद है which of the following is the stationary part of electrical machine? Stator is the stationary part. Piezoelectric crystal is used to measure acceleration. Precision measurement of resistance is measured generally carried out by AC bridge method. ठीक है, सो ये आज की वीडियो में हमने पेपर 1 जो था वो डिस्कस कर लिया. ये जो बुक है अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी जो है वो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये नंबर जो है वो यहाँ पे गिवन है. ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप करके ये बुक ख़रीद सकते हैं. बाकी ये है कि हम एक एक पेपर को इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर हम शेयर करेंगे. सारे जितने भी MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सो अगर आप वीडियोस के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियोस के थ्रू पढ़ लें, और अगर आप बुक ख़रीदना चाहते हैं ये वाली और अपने थ्रू अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बुक के लिए. ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पेपर है हमारा NESCOM का असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल 2021 का, इसको डिस्कस करेंगे. और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर आते जाएंगे 1 बाय 1 वो उन सबको हम डिस्कस करेंगे. सो ये बुक हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट होगी और ये लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे.